today we will discuss the principles of effective communications. So, look at what is effective principle, what is effective communications. A sender should have the knowledge of some special facts which he can use in particular situations to make communication effective. So here, sender should have the knowledge of what he is going to convey to the receiver. So these special effects are known as principles of effective communication. So these particular special facts that the sender should have knowledge is called a principle known as effective communication. In order to become effective and useful communications, useful, so communication must fulfill certain conditions. So to become an effective communications must fulfill certain conditions. So what are these particular conditions? So these conditions are principles of effective communication. So there are particularly 7 C's, known as 7 C's. So principle of clarity, principle of consistency, principles of completeness, principle of completeness, principle of consciousness, and principle of consideration, and have principle of correctness, and principle of courteous. So now look, number 1, principle of clarity. So whenever an idea, the first principles of effective communication is principle of clarity. So whenever an idea is to be communicated, attention should be given on its clarity. The idea should not confuse or vague. So here, first of all, it should be clear in the mind of the sender as to what he wants to say. So यहाँ पे सेंडर को अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं रिसीवर को. Now look at the second one, the principles of consistency. The second principles is principles of consistency. Whenever a person wishes to communicate certain message, he must be consistent in his expression. So here, consistency should be maintained in sending message. Sender should not change his words and actions. So here, the consistency implies that communication should always be consistent with plan, objectives, policies, etc. of the organizations, and not conflicting. So here, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कि जो सेंडर अपने मैसेज को सेंड कर रहा है उसे अपने मैसेज के ऊपर कॉन्सिस्टेंट रहना होगा. जैसे कंपनी में अपना बिजनेस में अपना प्लान ऑब्जेक्टिव पॉलिसी जो सब कुछ वो कॉन्सिस्टेंट होना चाहिए, ताकि वो जो मैसेज वो ट्रांसमिट हो सेंडर को वो कॉन्सिस्टेंट रहे. तुरंत एक मैसेज दिया उसका तुरंत एक चीज़ उसको चेंज ना हो. इसे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्सिस्टेंसी टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव. नाउ look at the third one, principles of completeness. Complete information makes communication effective. Message should be complete in all respect. Insufficient statement may create misunderstanding in the mind of the receiver. So here, communication must be complete to avoid confusion in the mind of the receiver. Incomplete communication leads to assumptions and guesses, and the consequent delay in further action plan. So message must filled with complete information, so that the receiver get full informations from the sender. So the complete information makes communication effective. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो है, जो सेंडर अपने इंफॉर्मेशन जो रिसीवर को दे रहा है वो फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए कि मैसेजर जो रिसीवर जो है उसके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ क्लियरली समझ सके. इस तरह कि मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए. नाउ
The fourth one, principle of principle of consciousness. Uh, though all detail should be included in message, the sender should be concise as well as precise as much as possible so that senders and receivers time is saved. So here the lengthy letters may not result in desired actions. High sounding phrases may reflect sender scholarship but may not ensure desired actions. Therefore, brevity is the soul of communications. So, प्रिंसिपल कॉन्शसनेस मीन्स यहाँ पे कि मैसेज जो है वो डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेंडर शुड बी कॉन्साइज एज वेल एज प्रिसाइज। सेंडर को पूरा ठीक प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, छोटा करके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो उसका मैसेज है वो ही उसको रिसीवर से सेंडर को रिसीवर को देना चाहिए ताकि रिसीवर और सेंडर दोनों का टाइम भी बचे। सो वो कॉन्साइज होना चाहिए, प्रिसाइज एज वेल एज कॉन्साइज होना चाहिए वो मैसेज। नंबर फिफ्थ, principles of consideration. Principle of consideration. Here, principle of considerations. Whenever a message is prepared, not one has to consider the state of mind of the receiver, his background, his emotions, etc. Therefore, sender has to emphasize with needs, desire, etc. of the receiver. So here the sender has to keep in mind the background emotion, education, qualifications of the receiver so that he can design or organize his message according to the level of understanding of the receiver. इसका मतलब यहाँ है कि सेंडर को रिसीवर के बारे में डिटेल्स जानना होगा उस पे कुछ मैसेज देने से पहले कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके इमोशन क्या है, वो कहाँ से आया है, ताकि उसके हिसाब से उसे उसका मैसेज उसको वो डिज़ाइन कर सके ताकि रिसीवर जो है वो इजीली उसका मैसेज अंडरस्टैंड मतलब समझ सके, ठीक है। नंबर नाउ लुक एट 6 principles of correctness. Now 6 principles is the principles of correctness. So here accuracy of the message is a significant factor in transmitting message. An incorrect message may create confusion in the mind of the listener and may spoil the effectiveness of the message. So here principle of correctness, accuracy here must for transmitting a message. So here the term correctness means using correct format, grammar, punctuation, spelling, etc. So here the sender should keep in mind on these particular factors before sending or before preparing his message. So correctness is the one of the most important principle of effective communications. मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी के ऊपर सेंडर को ध्यान देना होगा ताकि जो रिसीवर है उसे कुछ कंफ्यूज ना हो। अगर कोई रिटर्न कम्युनिकेशन, अगर रिटर्न फॉर्मेट में कोई कम्युनिकेशन अगर सेंडर दे तो उसे सब कुछ ध्यान रखना होगा, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, ताकि रिसीवर उसे कंफ्यूज ना हो। और अगर वो वर्बली कम्युनिकेशन हो, अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो भी इससे रेफरल लैंग्वेज सिंपल करेक्ट करके उसे यूज करना होगा। नाउ प्रिंसिपल ऑफ courtesy. Principle of courtesy. Here courtesy is an important contributor for effective communications. Thanking the other persons for a favor, apologizing for a mistake, avoiding negative expressions are some of the ways in which one can make communication courtesy and effective. So here, so in this principle of courtesy means here the sender should apologize, should thanks to the
receiver if he mistakes. So courtesy is very important for making communication effective. यहाँ पे courtesy के मीन्स यहाँ पे है जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, अगर कोई मिस्टेक हो तो वो अपोलोजाइज करती तुरंत ही, और कुछ अगर एम्प्लॉई या सबऑर्डिनेट्स कुछ करे तो उसके इन फेवर उसे थैंक यू अप्रिशिएट करना होगा उसके काम को। अवॉइड नेगेटिव एक्सप्रेशन को अवॉइड करना होगा। कुछ गलत कर दिया तो उसे डायरेक्ट कुछ नेगेटिव ना बोल के उसे ठीक ठाक करके उसे काम को ठीक करना होगा ताकि वो काम को बेहतरीन कर सके, ठीक कर सके। सो दिस सम ऑफ द वेज टू मेक कम्युनिकेशन effective. So these are the 7 C's. Next day we will discuss the other less importance, the principles of effective communications. Thank you.